Delhi NCR's winter air remains toxic with pollution levels staying high, even though farm fires have reportedly been at a multi-year low. A recent Center for Science and Environment study for the months of October and November attributed the air toxicity largely to vehicular emissions, industrial activity, and biomass burning. Driven by the toxic mix of PM 2.5, nitrogen dioxide, and carbon monoxide, the air quality over the past 2 months remained mostly in the very poor to severe range. While 13 hotspots, including Ashok Vihar, identified in 2019 remain problematic, new ones have worryingly emerged. With its local AQI level above 400, Vivek Vihar has remained a hotspot for 4 years, and its annual PM 2.5 average is comparable to that of Ashok Vihar. AQI here in Kaushambi is 460. That is almost about 8-9 times more than the maximum permissible value. लोग उनको breathing trouble है, and nebulizers आप कब तक देंगे? Kids are surviving on nebulizers, and there's nothing else you can do about it. The CSE study tracked hotspots where the PM 2.5 levels from vehicular emissions closely mirrored daily spikes in nitrogen dioxide and carbon monoxide during peak traffic hours. Officials said measures are being taken to ease congestion in these areas, including clearing traffic bottlenecks and managing crowds. करीब 62 हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली में जो हम लोगों ने ईयर बार्ट किए जिस पे हम लोग स्पेसिफिक उस पर वो भी काम कर रहे हैं कि उन हॉटस्पॉट्स को ट्रैफिक मुक्त कर रहे हैं. उसमें काफ़ी हम लोगों का जो है प्रोग्रेस है. तमाम एजेंसीज PWD, MCD, DTC और भी जो एजेंसीज हैं उससे कोऑर्डिनेशन करके हम लोग वो 62 हॉटस्पॉट्स को भी ट्रैफिक कंजेशन फ्री बना रहे हैं, जिससे भी पॉल्यूशन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा. क्रिसमस ईव पे एंड न्यू ईव पे हम लोग का बड़ा डिटेल्ड ट्रैफिक अरेंजमेंट निकलता है. इसमें जितने भी जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे पार्किंग की समस्याएं होती हैं, तो हम लोगों का वहाँ स्टाफ रहता है. कुछ अल्टरनेटिव पार्किंग्स का भी हम लोग करते हैं. As per the study, pollution due to dust in the summer falls from 31 to 34% to 6 to 15% in winter. But emission from vehicles, industries and biomass burning rise sharply to 85 to 94%, increasing toxic gas levels. On more than 30 of the 59 winter days, 22 monitoring stations recorded carbon monoxide above safe levels, underscoring the dominant role of traffic-related emissions in Delhi's winter air pollution.